वेलकम टू आइडा 247 ओडिया। तो बहुत दिन पर आफ्टर ए लॉन्ग टाइम हम आसुचे कौन ना हमर क्लास करिया पई कहा पई ना एसएसबी टीजीटी पई। ओके तो बी रेडी स्टार्ट करबा हमें हमर क्लास जो थिरे कि हमें प्रीवियस ईयर पीआईक्यू किछि डिस्कशन करबा जोटा हम पई हेल्पफुल हबम। तो टिके सेशन ने समस्ते जल्दी जल्दी जॉइन हो जा निजर फ्रेंड्स मान को टिके सेशन शेयर कर दियो देन विल स्टार्ट आवर क्लास वेरी सून। गुड मॉर्निंग चंदन। गुड आफ्टरनून सॉरी गुड मॉर्निंग नाही गुड आफ्टरनून मु भी बोली जाइए सब बेले सकाळ क्लास करिकी मुंड फुंड आउ किछि काम करूनी पागला हे गलिनी। श्रद्धा ऑलवेज श्रद्धा चंदन। तो ठीक अच्छी मैम कहले मैम कहले तापरे ग्रीटिंग्स मम मैम मम ठीक अच्छे जी आस कि ना आस क्लास स्टार्ट कर देबा धीरे धीरे आसीबो। द मेन पर्पज ऑफ टीचिंग प्रोसेस इज इम्पार्ट इन्फॉर्मेशन टू द लर्नर ना मेकिंग लर्नर्स नो बेसिक लाइफ स्किल चेंज लर्नर्स बिहेवियर एनेबल द लर्नर टू रीड एंड राइट। वाओ आज बोधे मो क्लास रे सबुठ हाईएस्ट अछंदी काहे ना मो एसएसबी टीजीटी बाई क्लास तो छी ना कि ठीक अच्छे जति भी छुआ था हमें क्लास करिबा। B yes making learner know basic life skills option B। next बा कौन ना the actual job of a teacher in the classroom is to ensure proper discipline exercise control over the class create condition for learning monitor learners behavior। काली ठीक हेलो हेलो स्मृति काली ठीक एमती किछि गोटे क्लास आसीथिला तो क्लास आसला को जेमती गोटे क्वेश्चन बीएड रे आसला कि टीचर रोल कौन क्लासरूम मैनेजमेंट रे ना क्रिएट कंड्यूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट बा क्रिएट कंडीशंस फॉर लर्निंग जोड़ा हमर राइट आंसर हबो कौन ना ऑप्शन सी क्रिएट कंडीशंस फॉर लर्निंग। प्रॉपर डिसिप्लिन कंट्रोल हबनी मॉनिटर क्लासरूम बिहेवियर हबनी आमे गोटे कंड्यूसिव गोटे इफेक्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट को क्रिएट करिबा। ओके नेक्स्ट बा हमें कौन थर्ड क्वेश्चन को which of the following theories define teaching is client counseling Carl Rogers Jean Piaget John Dewey Jess Brunner।
वेरी गुड ना क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग किए कहिथिले ना हमर कार्ल रोगर्स कहिथिले जे कि कोन कहिथिले ना ह्यूमनिस्टिक अप्रोच बा थ्योरी ऑफ लर्निंग कहिसंती फुल फंक्शनिंग पर्सन सेंटर्ड थेरापी द सेल्फ कॉन्सेप्ट तापरे आउ कोन ना हमर एठी कुआ जाई छी आइडियल सेल्फ एंड रियल सेल्फ जोडा के हमें कहू छे आइडियल सेल्फ वर्सेस रियल सेल्फ congruence versus incongruence एलटीआर एग्जाम रे तमरो गोटे आस्थिला फास्ट जोटा हेइथिला एलटीआर पीसीएम रे कॉन्ग्रुएंस वर्सेस इनकॉन्ग्रुएंस आसी नथिला तो आस्थिला आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ कांसेप्ट नोशन का सहित मिसुची ओके गुड आफ्टरनून रजत सेल्फ कांसेप्ट सेल्फ फोर्थ एगुडा दिया हेइथिला आइडियल सेल्फ कांसेप्ट विषय दिया हेछि नेक्स्ट छिबा हमें 4 नंबर क्वेश्चन को ना the assessment for learning is typically done in the beginning of the course at the end of the course during teaching learning process any time of program okay गुड आफ्टरनून प्रतीक्षा पियोर क्लास केते बेले होची पिले तमे टिके क्लास देखो काहे ना एटा टीचिंग सेक्शन ना एग्जाम मु जानि नाही पियोर क्लास केते बेले होची वाईटी फॉलो करो केते बेले होची तमे माने जानि परिबो yes and yes काली गोटे क्वेश्चंस मु देखिली बीएड रो साइंस सेक्शन ने आमे कहू छे बेले बेले ना ए गुडा का प्रतीक्षा एक्चुअली मते लागु छे किछि गोटे टाइपिंग मिस्टेक अछि यस जेटी पय काहे के हेल्पफुल हबनी तमरो थ्योरी कांसेप्ट सब किछि जेटी हो तमे जो ओटीटी एग्जाम हो एसएसबी टीजीटी हो सबुथि पय तुमको ए सब हेल्पफुल हबो ओके तो राइट आंसर होची ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड काली गोटे क्वेश्चंस पडिथिला साइंस रे आई थिंक नो साइंस रे पडिथिला बदे गोटे ड्राइविंग टेस्ट फिलारा परीक्षा कराउछ विथ सम क्राइटेरिया विदाउट कंपेयरिंग विथ अदर्स ड्राइविंग स्किल्स माने आमे अन्य मानकर ड्राइविंग स्किल टेस्ट करिके कंपेयर करबा बिना गोटे सिंगल पर्सन रो ड्राइविंग स्किल टेस्ट करूछे आ सेटा को आमे कोन कहूछे ना फॉर्मेटिव ना क्राइटेरियन रेफरेंस ना आमे कहूछे नाम रेफरेंस ना कोन तो जहारा राइट आंसर हो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट तो से भले भाबरे क्वेश्चन कोठु किछि भी आसी जाउछि केबे हम पई इजी आसुछि केबे हम पई मॉडरेट आसुछि केबे हम पई हाई लेवल आसुछि तो सेते बेले क्वेश्चन टा को तमे भलो भाबरे बुझिबा दरकार क्वेश्चन टा एक्चुअली कोन जोटा कि तुमको फ्यूचर रे हेल्पफुल करिवो नेक्स्ट जिबा यस क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट ही हेडा नेक्स्ट चला 5 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ टीचिंग डज नॉट फॉलो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी एमिति क्वेश्चन जदि पढिबा हम तो कहबा पेडागोजी रे हमको एसएसबी टीजीटी रे जदि 23 क्वेश्चंस करबा को दोउछि हमर 23 क्वेश्चंस ही करेक्ट हे जबो जदि ए लेवल लो क्वेश्चंस दबो ताले हमें आराम से आखे बुझी कहबा जस्ट हमको टिके प्रैक्टिस दरकार जस्ट हमर टिके कॉन्फिडेंस बूस्ट होबा दरकार नहले हमें फुल नहीं आसीबा जहा की होची लेक्चर मेथड एंड काली भी तांकर गोटे मेथड ऑफ क्वेश्चन आसला अच्छा तमे माने कहले देखिया ह्यूरिस्टिक मेथड किए देइथिले तम माने त हमर सब बीएड करि सरलणी आंसर दियो काली से मानकर आसला heuristic method of teaching एटा given by whom के ही गूगल सर्च करके आंसर दबनी heuristic method काले बीएड पिलांगा एंट्रेंस रे आस्थला अच्छा रजत वेरी गुड हाउ के काली किंतु जाओ तम माने जानिचो बहुत बढ़िया काली किंतु पिला मार के आछंती पियाजेट
पिला मारिक आछन स्किनर मो सिंपल कथा लाइफ रे एथ लगी हमें कहू माने सेटे कंफ्यूजन हे छि काहे ना से माने एते सब जानिबे केमती किंतु मु गोटे जिंस कहबी कि हमको सब बेले देखि की करिया कथा कोन देखि कि ऑप्शन और माने काटी काटी के स्किनर थिला पियाजेट थिला आ गोटे समथिंग कोन थिला देन आर्मस्ट्रांग थिला तो हमको एटा चूज करियार अछि एटलीस्ट हमें गोटे गेस रे करि देले भी जो अनुसार ठीक हे जिवो नेक्स्ट आसला कोन ए सीरीज ऑफ सिचुएशन प्लेस्ड बिफोर लर्नर्स फॉर eliciting specific type of behavior is known as examination report card a test a portfolio तो पिला माने जो माने भी मोर टेलीग्राम चैनल ले जॉइन ना हो तुम मानन को चैट बॉक्स रे टेलीग्राम लिंक टी कनेक्ट अछि प्रोवाइड कर दिया जाय छी सीडीपी बाय सुनीता मैम तमे से टेलीग्राम लिंक रे जॉइन हे परिबो तो यार राइट आंसर होचे टेस्ट ए पोर्टफोलियो कोन ना कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क माने स्टूडेंट मानकर जो गुडा का बेस्ट वर्क तार कलेक्शन हमें करि थाउ थो पोर्टफोलियो मैम बीएड एग्जाम शेष मैम प्रणाम रियली मिस यू पूजा मैम बीएड एग्जाम शेष किंतु मो सिटी अप्लाई करबा को चाहे मैम सिटी प्रोसेसिंग कोन अछि कहंतु अच्छा पूजा कौन जानिया को चाहूच निहाती भाव में कहबी सिटी एंट्रांस एग्जाम ना सिटी रो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी ना सिटी रो एडमिशन कौन कहिले मु से जिनसटा कहबी ओके एंड मते मिस करियार नाही मु पूरा डाउला डाउला मनिसठी जे के सब दिन दिन 12 रे तुम पई वाईटी रे अवेलेबल रहउची केवल जे बीएड एग्जाम सरी गले एसएसबी टीजीटी एग्जाम सरी गले किंबा कौन सी स्पेसिफिक एग्जाम सरी गले मते मिस करबा सही नुह मते सही दिन मिस करबो तो जो दिन मु एठी नथिबी मतलब नुह कि मु जदी ए प्लेटफॉर्म रे नथिबी नुह मु ए दुनिया रे नथिबी से मिस युटा सही दिन कहबो जो दिन मु उठी जाइतिबी ऊपर को जो जाय एठी अछि सही जाय जमा भी मिस करबार नाही सब समय रे अछि बंचितिबा जाय भी अछि लास्ट मोमेंट जाए ए टीचर जो टाइम रे काम रे आसीबो सब टाइम रे म अछि जदी भी कोठी काम रे आसी पाइली तम माने तो मोठो हाईली इंटेलिजेंट ठीक अछि as the child grows up there is visible increase in height and weight this process is called development growth maturation na transformation सिटी एग्जाम सिटी एंट्रेंस एग्जाम कोन पाठ कोन अछि मैम ठीक अछि पूजा कहू छी यस वेरी गुड राइट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कोन बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एंड मैच्योरेशन कोन इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस नेक्स्ट चला कोन Now, which of the following is not used as an assessment tool in constructivist learning process? Standardized rubric, portfolio, concept map. किछि नहीं पूजा होपफुली बीएड पाई जाओ बीएड पाई साला परे पुणी थरे आसीबो मोरी क्लास देखिबा को ओटीईटी पाई सीटेट पाई एवं एसएसबी टीजीटी पाई आफे फ्यूचर रे बहुत आगो को जाओ यस ऑप्शन ए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट नुह ओके मु क्लास लास्ट रे कहि देबी कोन कोन केमिति प्रिपरेशन अछि
Next asila, which of the following is least important while addressing individual differences in the classroom? Need-based learning opportunity, presenting diversified learning style, improved ventilation and bright light, ability-based grouping of learners. एटा आउथरे भी कहिथिले एटा तम पाइनक पई टैक्स रहला म गोटे आ गोटे क्लास रे क्वेश्चन सब करि जे जेतु पीआईक्यू यार राइट आंसर देबा को चेष्टा करो देखिबा केते जन दउछ तापरे मु कहिबी एटा आउथरे क्लास रे भी हमर डिस्कशन हेइथिला ओके डी डी देन आंसर कोन वेरी गुड 10 number continuous and comprehensive internal evaluation that goes on during the entire academic session is mainly based on summative evaluation, formative, non-referenced, criterion referenced. Pranam Swagatika. कौन टे हबो very good formative evaluation. Next. Now, personal growth and self-actualization were the basic element of learning theory given by J.B. Watson, J.S. Brunner, R.M. Gagne, na Carl Rogers. Personal growth and self-actualization. Carl Rogers is the right answer. Next, which of the following terms is not associated with constructivist approach to learning? Exploration, interaction, exposition, collaboration. Very good. Option C, that is exposition. Next asila, which of the following depends entirely on biological factor? Growth, maturation, socialization, inculturation. को जिनसटा depends entirely करे biological factors उपरे. Yes, maturation. Next. Now, a student compares his test scores with his own score, which he obtained 1 year ago. It is an example of peer assessment, self-assessment, internal assessment, formative assessment. कोटा हबो
Yes. A student compares his test score with his own score with obtained 1 year. It is self-assessment. Okay. Next is which of the following characteristics of a test is more important than all others? Objectivity, reliability, usability, validity. स्वागत एसएसबी टीजीटी और आरएचटी आसीबा कि नहीं सेटा तुमर सो कॉल्ड गवर्नमेंट सिस्टम ही भलो से आंसर दे पारिबे. वेरी गुड. वैलिडिटी आमे केवल कहबा हां आसीबो हां आसीबोनी हां आसीबो हां आसीबोनी किंतु केबे आसीबो तार आंसर टा केवल से ही दे पारिबे. Which of the following is not true for summative assessment conducted at the end of the course? Feedback ना कौन. Very good. Feedback provide to students teacher, that is formative. Next as the main function of TLMs as used in the classroom is attracting learners attention, improving classroom discipline, enriching learning experience of learner. कौन हव? तो राइट आंसर होची कोन ना एनरिचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर्स. नेक्स्ट आसला कोन ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस प्रोवाइड्स फॉर बेटर लर्निंग कंडीशन? टीचर सेंट्रिक, लर्नर सेंट्रिक, सब्जेक्ट सेंट्रिक ना लाइब्रेरी सेंट्रिक. तो एटा होची लर्नर सेंट्रिक. सुश्री प्रियंका मैम प्रणाम. हाउ आर यू? आई एम फाइन प्रियंका. Then diagnostic assessment of students is conducted by teacher at the end of the lesson, during teaching learning process, at the beginning of the lesson, at the end of the lesson. Okay. Then jiba now the interaction among physical, mental and emotional development is called the process of socialization, motivation, sanskritization na maturation. Could have एते संख्यक पिलर मते लागुची एसएसबी टीजीटी पई तुमे केते आग्रही. Very good. Maturation. Next, question number, the study of variation in psychological characteristics of individual is known as study of learning and teaching, behavioral disorder, social discrimination, individual differences.
The study of variation in psychological characteristics of individual is known as okay. Next ଯିବା କଣ साउंड आसुनतला काइना माइक टा मु थोई देइथिली द नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग स्टूडेंट कैन हेल्प अ टीचर इन मेंटेनिंग प्रॉपर क्लास डिसिप्लिन स्टडीing necessary literature devising suitable teaching strategies effective classroom management devising suitable teaching strategies. Next देखो Narrowgods define the process of learning as change from ignorance to knowledge, real life to ideal life, concrete to abstract understanding, known to unknown fact. तो ये डायरेक्टली हमको दे देइछि कौन हबो B. Okay, very good. Now, real life to ideal life. Next asla, as a result of feedback based on formative assessment, learner modify their existing knowledge. In this case, it is assessment of learning, assessment with learning, assessment for learning. Now, assessment as learning. As a result of feedback based on formative assessment, learners modify their existing knowledge. Assessment for learning, okay. Very good. Next, now the degree to which learner is prepared to receive formal instruction is technically known as learning ability, learning readiness, learning capacity, learning eagerness. कौन very good, learning readiness. Next is now the characteristic of a test item by virtue of which it can separate good learners from poor one is technically termed as difficulty value of the item, discriminating power, validity of the item, and reliability of the item. Right answer होची discriminating power of the item. Next asla which of the following is least important for a teacher while providing for individual differences in the classroom? Diverse background of the learners, heights and weight of learners, learning style of the learners, na level of motivation of learners. The right answer is option B, height and weight of learners. Okay. Next,
Which of the following educational theorists gave the socio-cultural theory of cognitive development social constructivism? जीन प्यारेट तो cognitive constructivism देथिले ताले social constructivism किए देथिले ना हमर लेव वाइगर्स्की देथिले कोन ना social constructivism theory जोथरे कि से विभिन्न प्रकार कीवर्ड्स यूज करथिले as like scaffolding तापरे हमें कहि परिबा जेपीडी तापरे हमें कहि परिबा कोन MKO the most keyword is social interaction आउ तापरे हमें कहिबा कोन जेमति कि language and culture next now the most useful teaching learning material is to be used a teacher is the one which attracts attention of learners to a teacher is attractive and beautiful to look at involves several sense organs in learning helps maintain better classroom discipline तो ये है ऑप्शन सी नेक्स्ट जीवा कौन ना द मेन पर्पज ऑफ असेसमेंट इन कंस्ट्रक्टिव लर्निंग अप्रोच इज टू डेवलप हैबिट ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग नो हाउ चिल्ड्रन लर्न एंड व्हाट दे लर्न एंसर क्लासरूम डिसिप्लिन ना एनकरेज लर्नर टू रेस्पेक्ट टीचर व्यूज ऑप्शन डी तो हबनी डेवलप हैबिट ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग हबनी तापरे एंसर क्लासरूम डिसिप्लिन हबनी ताहले कौन हबो ना ऑप्शन बी हबो राइट आंसर कौन ना टू नो हाउ चिल्ड्रन लर्न एंड व्हाट दे लर्न नेक्स्ट जीवा कौन Now, the major element of humanistic theory of learning given by Carl Rogers is the concept of co-concept है Carl Rogers करा humanistic theory दिया जाइथिला whole functioning individual. Okay. After that, which one of the following terms is most closely associated with the constructivist pedagogy of learning? Description, explanation, experimentation, indoctrination. तो experimentation word टा कौन हबो ना कहा सहित रिलेट हबो ना हमरा associate with constructivist pedagogy. 33 number informative assessment system feedback provided by the teacher to learners as that punishment reinforcement reward ना prompt ना हमर feedback ता होछि reinforcement okay then asile kono na the first step in the process of test construction is identification of the content domain formulation of objective development of test blueprint collection of construction of test items kon habo 34
नेक्स्ट जीवा now which of the following types of test items are more appropriate for assessing higher order thinking तो हमको higher order thinking पई कोन दिए ना essay type test जोठी रे कि हमको कोन फ्री रेस्पॉन्स टाइप आ गोटे रेस्ट्रिक्टेड रेस्पॉन्स टाइप जिंस थाए फ्री रेस्पॉन्स टाइप रे हम इच्छा अनुसार हम फीलिंग्स हम इमोशन हम थिंकिंग प्रोसीजर हिसाब रे आंसर दो एवं रेस्ट्रिक्टेड रेस्पॉन्स टाइप रे हमको ऑलरेडी फिक्स कराय थाए 100 वर्ड 200 वर्ड रे हमको आंसर देबार अछि 36 question which of the following is an example of formative assessment probing question in the classroom examination after end of the course final submission of project report examination for promotion to the next grade कौन हवा probing questions in the classroom very good then asla which of the following is audio visual aid for use by teachers model television tape recorder projector तो यार राइट आंसर होची टेलीविजन ऑप्शन बी ऑडियो विजुअल एड्स then asla which of the following teaching method ensure active participation of learners तो obviously discussion method रे हमर active participation ही हेई थाए next asla कोन ना हमर 39 the basic purpose of diagnostic assessment is to know learners ability to learn understand learners strength and weakness decide the strategies of teaching na motivate learners for active learning कोटा हबो 39 तो 39 आंसर हबो कोन ना understand learners strength and weakness which of the following strategies should be preferred by a teacher for ensuring effective learning about birds and their life तो एटा हबा हमर कोन ना organizing a trip to zoo तांको कोन करबा ना गोटे ट्रिप नवा जू को ओके तो पिला माने आज एही 40 क्वेश्चंस हमर थिला किछि सीआईक्यू को नै कि एंड यस तुम मन को गोटे इन्फॉर्मेशन जो माने संकल्प 6.0 एसएसबी ऑलरेडी 5टा बैच तुमरा सरी सरलानी जो माने चाहू छ गोटे स्ट्रांग प्रिपरेशन करबा पाई एवं संकल्प 6.0 रे एनरोल हबा पाई ओडिसा एसएसबी टीजीटी फाउंडेशन बैच 7 जून रो तमरा स्टार्ट 7 जून कहूची सॉरी 4th जून रो तमरा स्टार्ट हबा को जाउची आज 1st जून आ 3 दिन परे तुमरा क्लास स्टार्ट होची तमे जो माने इंटरेस्टेड बैच रे एनरोल करि परिबो यूज कोड YT46 को यूज करि परिबो एंड एठी तुमको स्क्रॉल होथवा नंबर रे कॉल करी क्लास रे तुमको कोन कोन अवेलेबल होची किबा तुमर जदी किछि क्वेरी अछि तुमे माने बुझी परिबो देखा हबो अपकमिंग डे रे जेबे क्लास हबो निहाती तो नोटिफिकेशन तुमको पाक पहुंची जिवो थैंक यू सो मच टेलीग्राम लिंक रे तुमको आजरा पीडीएफ आवेल